नमस्कार। आज इस वीडियो में इनफर्टिलिटी पार्ट 2 देखेंगे। इसके पहले देखा था इनफर्टिलिटी पार्ट 1। इनफर्टिलिटी पार्ट 1 कंटेन्स जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट इनफर्टिलिटी एंड कॉज, ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट in female. Today we will see in this video causes and treatment of infertility in female. So we start from this proverb or श्लोक in Sanskrit, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अपमान मत करना नारियों का, इनके बल पर जग चलता है। पुरुष जन्म लेकर तो इन्हीं के गोद में पलता है। हमारे समाज में इनफर्टिलिटी के लिए पूरा दोष और पूरा जिम्मेवारी औरतों पर ही थमा दिया जाता है या माना जाता है। जबकि इसके पहले पार्ट 1 में देखें कि टोटल कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। इनफर्टिलिटी इन फीमेल और कॉज रिलेटेड टू फीमेल इज 30%, इन मेल आल्सो 30%, 20% इन बोथ एंड 20% अननोन। सो वी सी वन बाय वन। This slide or video shows mothers and baby in relation, love between mothers and baby, जिसे हम नारी जगत कहते हैं। नारी प्रकृति की महान सृष्टि है जो विभिन्न रूपों में हमारे समाज में, हमारे परिवार में रहती है। किसी की बेटी, किसी की पत्नी, किसी की बहू, किसी की फूआ, किसी की माँ। एक स्त्री जितना संघर्ष करती है और जितना दर्द सहती है, उतना पुरुष कभी नहीं सह सकता और बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो हम और आप अपने समाज में देखते हैं। This is appearance of sterile female facial expression. Causes of sterility in female. In this slide, common gynecological symptoms like colic pain, menstrual pain, breast pain, irregular menstrual period, and increased vaginal disorders in form of leukorrhea. So we see causes in female. What are the causes present in female which leads to condition of sterility? Number 1, systemic causes. एनीमिया, डायबिटीज मेलाइटस, ल्यूकेमिया, ओबेसिटी, एज ओवर 35 ईयर। साइकोजेनिक कॉजेज इंक्लूड्स फियर, फ्राइट, वेक्सेशन, शॉक, लॉन्ग कंटिन्यूड एंजाइटी, मैरिटल डिसहार्मोनी। मैरिटल डिसहार्मोनी मीन्स may be difference in age. Endocrinal causes or hormonal causes, hypothyroidism, hypopituitarism, defect in hypothalamus, Stein-Leventhal syndrome, that is pituitary and ovarian link disturbed, metropathia hemorrhagica, hypogonadotrophica menorrhagia।
These are causes related to endocrine disorders. Genital causes. Genital causes divided into 4 parts. Cause related to vagina or vaginal canal, cervix, uterus, fallopian tube, and ovary. So we see vaginal causes: non-canalization of vagina, absence of vagina, pinpointed appearance of vagina, atresia of vagina, vaginismus, due to gonorrheal, syphilitic, tubercular, pyogenic, monilial, trichomonas vaginalis, vaginismus, resistant hymen और imperforate hymen, फ्लोर सेमिनिस। फ्लोर सेमिनिस को हिंदी में वामनी योनि व्यापद कहते हैं। यह रेयर केस है जिसे हम बाद में फिर देखेंगे। रेक्टोसिल, यूरोथ्रोसिल। सर्वाइकल कॉजेज: इरोजन ऑफ सर्विक्स, कैंसर ऑफ सर्विक्स, इन्फ्लामेशन ऑफ सर्विक्स, हाई अप ऑफ द सर्विक्स, न्यू ग्रोथ बेनाइन और मेलिग्नेंट, नॉन कैनालाइजेशन ऑफ सर्विक्स, सर्विसाइटिस ड्यू टू गोनोरियल, सिफिलिटिक, ट्यूबरकुलोसिस, पायोजेनिक इन्फेक्शन ऑफ सर्विक्स, ट्रॉमेटिक लीजन इन सर्विक्स ड्यू टू excess sexual intercourse or instrumental or due to during process of DNC, atresia of cervix, closure of os, altered direction of cervix, less mucus secretion from cervix, hypoplasia of cervix, cervical polyp, cervical stenosis. Uterine causes are absence of uterus, rudimentary uterus, inflammation of uterus, infantile uterus, bicornuate, tricornuate or multicornuate uterus, extra growth of uterus, malignant growth in uterus, benign fibroma, myoma, polyp, epithelioma etc. मेट्रोपैथिया हेमोरेजिका ऑफ यूटरस, डिस्फंक्शनल यूटराइन ब्लीडिंग, इंडोमेट्राइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, गोनोरियल, सिफिलिस, पायोजेनिक इन्फेक्शन इन यूटरस, एट्रेसिया ऑफ यूटरस. So these causes related to uterus: salpingitis, tubal impotency, long tortuous course of fallopian tube, congenital non-canalization of fallopian tube, adhesion of wall of the fallopian tube, pressure on fallopian tube by any other tumors, Stein-Leventhal syndrome or polycystic ovary, tumor in fallopian tube. Miscellaneous causes: idiopathic, leukorrhea, A-vitaminosis especially vitamin K and E, addiction, mumps in childhood. Those female suffers from mumps in childhood, in adult age she may suffers from mastitis. So we see these are the causes related to infertility in female. We investigate properly for the treatment and management of the case, in which we take the patient history, constitution and specific diseases like gonorrhea, syphilis or other diseases like TB, etc. Menstrual history: late, early, scanty, smell, profuse or irregular menstruation. In obstetrical history: APH, PPH,
sexual life, dyspareunia vaginismus, physical examination, psychological history, shock, fear, anxiety. Gynecological examination include examination of breast, pubis, vagina, cervix, uterus, fallopian tube, ovary. Tubal patency test, HGG of 6 months of DNC if pregnancy is not occurred. Ovulation test, postcoital test after 2 hours of coition, laparoscopy test, pH of vaginal secretion, DNC, hormonal estimation, blood group, blood sugar, urine routine and culture, stool routine and culture, chest X-ray, complete blood count, ultrasound of KUB for detection of bicornuate, tricornuate, size of uterus or absence of uterus, etc. After diagnosis of the case, according to cause, we give the medicine for management of the case. In homeopathy, medicine Illumina, Borax, Creosote, Ignacia, Medorinum, Merxol, Pulsatilla, Platina, Staphysagrия, sulfur, natrum carb, phosphorus, calcarea phos, mag phos may be given according to case. We see few symptoms of leading medicine. Agnus cactus, transparent but staining linen yellow, passes imperceptibility from the very relaxed part. In Illumina, acrid and profuse running down to hill, that is leucorrhea. लेकिन ऐसा केस अभी वर्तमान समय में नहीं मिलेगा. एक्रिड एंड प्रोफ्यूज रनिंग डाउन टू हिल. रनिंग डाउन टू हिल ये तब लिखा गया जब सैनिटरी पैड के यूज नहीं हुआ करते थे. एम्ब्राग्रेसिया, थिक ब्लूइश वाइट म्यूकस स्पेशली और ओनली एट नाइट. अमोनियम कार्ब, वाटरी बर्निंग फ्रॉम यूटरस, acrid profuse from vagina, excoriation of vulva. So these are the leading symptoms of the leucorrhea. Medicine especially for sterility, Embragresia, Borax, Lycopodium, Thuja, Natramur, Lysine, Natrum carb, Platina, Sepia. These medicine given according to case. In case of blockage of fallopian tube, first we advise urine and stool routine and culture examination, and on the basis of isolation of bacteria in culture or sensitivity test, we prescribe medicine along with constitutional or indicated medicine as intercurrent. For blockage of fallopian tube, different technique present in modern medicine. In homeopathy, with the help of homeopathic medicine, it takes 3 to 6 months to become canalized or opening of canal of fallopian tube with the help of medicine Calcarea floor 12x with indicated medicine. So medicine depends upon the nature of the patient, appearance of the patient,
and according to cause, may be physical cause or mental cause. It also required in detail case taking of male and female partner both. So, success of chances in treatment of sterility in homeopathy is excess. In modern medicine, only one technique is at present time in practice, that is IVF, in vitro fertilization. So this is technique, not particular of any medicine. In this way, we succeed in case of treatment of infertility. It requires minimum 1 to 3 years. अगर ओवम बन रहा है, ओवम का साइज नहीं नॉर्मल है, मेल फीमेल और डिफरेंट मॉडर्न टेक्नोलॉजी का हम प्रयोग करके इसमें अपनी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं. यू कॉन्टैक्ट फॉर फॉलोइंग सर्विसेज: एबनॉर्मल पेप स्मीयर, एनुअल एग्जामिनेशन, बर्थ कंट्रोल और फैमिली प्लानिंग, गायनिकोलॉजिकल इशू, मेनोपॉजल इशू, पेल्विक रिलैक्सेशन, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यूरिनरी स्ट्रेस इनकंटिनेंस, all type of gynecological and obstetric problems like mastitis, undeveloped breast, menstrual disorder, retarded growth, etc.